Yeah, hello everyone. So continuing from the last lecture, now we are going to discuss today a few more important points on generative AI. So without any delay, let's start the class. So historical evolution means from the sequential models to the transformers. Let's have a look on that. First of all, let me clear these things. Okay. So see, early NLP systems use RNN and later LSTM. Okay, so and this process tags sequentially one word at a time. So पहले का जो एनएलपी थे आरएनएन यूज करते थे उसके बाद एलएसटीएम यूज करने लगे वो सीक्वेंशियल था टेक्स्ट क्या करते थे वो एक वर्ड वन वर्ड एट a time. Now, these models relied on a hidden state to pass information forward, allowing only short-term memory. तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा limitation था कि they relied on a hidden state to pass information forward, and so they allow only short-term memory. Right now, as the sentence length increased, earlier context faded, making long range dependencies hard to retain. Okay, this is a sentence vertigo, so it's very difficult now. Now, sequential processing also prevented parallel computations, resulting in slow training and poor scalability. Transformers removed recurrence and introduced an attention-based architecture that processes the entire sequence in parallel. तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मर आया तो ट्रांसफॉर्मर ने रिकरेंस को रिमूव किया और एक अटेंशन बेस्ड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया जो पूरे सीक्वेंस को प्रोसेस कर सकते हैं वो भी पैरेलल में ठीक है तो each token can directly attend to every other token regardless of distance. Got it? Now this solved dependency issues, improved efficiency, and enabled massive scaling and made transformers the foundation of modern large language models. So we have seen तो जो पहले का था आरएनएन एलएसटीएम इसमें बहुत मतलब कुछ लिमिटेशन था जैसे कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही रख पाते थे सीक्वेंशियल नाउ ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर आया सो ये पैरेलल कंप्यूटेशन पॉसिबल कर दिया ठीक है और यही अभी क्या हो गया मॉडर्न एलएलएम का फाउंडेशन बन गया है ओके नाउ लेट्स टेक talk about tokens vocabulary and embeddings okay that is numerical language representation. So transformers do not understand text directly. ठीक? Instead, raw text is first converted into a numerical format through tokenization. तो डायरेक्ट टेक्स्ट को तो वो नहीं समझ पाते हैं ट्रांसफॉर्मर्स तो वो क्या करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर्मेट में सेंस कन्वर्ट करते हैं और उसको बोलते हम बोलते हैं टोकेनाइजेशन करना तो टोकेनाइजेशन ब्रेक्स sentences important है देख लेना what is tokenization breaks sentences into smaller units known as tokens which may be full words subwords or character fragments depending on the tokenizer ठीक है then each token is mapped to a unique numerical identifier within a fixed vocabulary हर एक टोकन को एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर में मैपिंग किया जाता है नाउ दिस आइडेंटिफायर्स आर देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर्स नोन एज एम्बेडिंग उसके बाद क्या होता है ये आइडेंटिफायर को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है देन ओके हम बोलते हैं एम्बेडिंग्स नाउ एम्बेडिंग्स आर नॉट arbitrary numbers they encode semantic meaning ठीक है इनका semantic meaning है words that appear in similar contexts tend to have embeddings that are close to each other in vector space. As embeddings move through multiple transformer layers, they evolve from simple word level representation into highly contextual vectors that reflect meaning based on the surrounding words, sentence structures, and overall intent. ठीक है? Now, token
Token is the smallest unit of text that the transformer model processes. तो सबसे smallest unit को हम क्या बोलते हैं? Token बोलते हैं. Tokens may represent a complete word and a subword fragment, or in some cases, individual characters. And tokenization allows complex language to be broken into manageable numerical units. Tokenization अभी हमने पढ़ा is the process of converting raw text into sequence of tokens, and this steps determines how text is segmented and directly impacts the model efficiency, vocabulary size, and the ability to handle unfamiliar or rare words. Then vocabulary is the complete set of all tokens that a model recognizes. पूरा जो tokens है उनका कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं जिसको मॉडल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है. इस टोकन इज इन द वोकेबुलरी इज असाइन्ड a unique numerical identifier, and the size of the vocabulary influences both the model's expressiveness and its computational requirements. ठीक है. Then token ID. Token ID is the numerical index assigned to a token within the vocabulary. This HIDIS allows text tokens to be represented in a format suitable for mathematical computation. Then embedding क्या है? Is a dense numerical vector that represents a token in a high dimensional space. Embeddings encode semantic meaning too, such that tokens with similar meanings have similar vector representation. Then a contextual embedding is an embedding that changes depending on the surrounding words. तो contextual embedding क्या है? जो surrounding words के ऊपर depend करके change होता है. As token passed through the multiple transformation or transformer layers, their embeddings evolve to reflect context, sentence structure, and intent rather than just dictionary meaning. हो गया. नाउ ये आप लोगों को समझ में आ गया. ठीक है. तो टोकेनाइजेशन, वोकैबुलरी, टोकन आईडी, एम्बेडिंग, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग. ना एक एग्जांपल लेते हैं, हम उससे समझते हैं. एआई मॉडल ट्रांसफॉर्म एंटरप्राइज वर्क फ्लोस एफिशिएंटली. ये हमारा सेंटेंस है. अब इसमें टोकन क्या क्या हम देखेंगे. टोकन टाइप, टोकन आईडी. हम इस एग्जांपल के लिए sorry, then embedding captures and nodes. So first AI, smallest in इसको हम बोलते हैं ना AI. ये सबवर्ड है. ठीक है. इसका आईडी हमने दिया 412, और ये एम्बेडिंग क्या कैप्चर करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट, राइट. देन इसका नोट्स हाई सिमेंटिक वेट. देन मॉडल्स, ये भी एक वर्ड है. आईडी दे दिया एक 1098. ये क्या कैप्चर करेगा? सिस्टम्स और आर्किटेक्चर. एंड ये प्लूरल नाउन है क्योंकि नोट्स में हमने लिखा प्लूरल नाउन क्योंकि ये मॉडल्स है. ठीक है. देन हमने लिया ट्रांसफॉर्म इज ए वर्ड. से 3051 इज द टोकन आईडी. ये क्या करते हैं? एक्शन और चेंज, और ये भार है. देन एंटरप्राइज, सिमिलरली वर्ड 8421 बिजनेस डोमेन, कॉन्टेक्चुअल स्कोप, वर्कफ्लोस वर्ड, right. 2290 say business process, domain specific. Then efficiently word 5176 performance quality adverb. तो ये पूरा सेंटेंस को हमने देखा क्या क्या टोकन हो सकते हैं, कैसे हम टाइप डिटरमाइन करते हैं, आईडी हम लेके मान से चल रहे हैं, और एम्बेडिंग क्या है? नोट्स. So this numerical transformation enables language to be processed mathematically while preserving semantic meaning. देन पोजिशनल एनकोडिंग. पोजिशनल एनकोडिंग के बारे में हम देखेंगे. तो ट्रांसफॉर्मर प्रोसेस all tokens at the same time, so they do not inherently understand what are. सबको एक साथ वो प्रोसेस करते हैं ट्रांसफॉर्मर, तो इसलिए वो ऑर्डर को नहीं समझ पाते हैं. ठीक है. पोजिशनल एनकोडिंग adds पोजिशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू टोकन एम्बेडिंग टू एड्रेस द लिमिटेशन. पहले जो ऑर्डर समझ में नहीं आया था ना, उसको हम
टैकल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोजिशनल एम्बेडिंग, जहां हमने एक पोजीशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया है टोकन में, टोकन एम्बेडिंग्स में, ताकि ये जो ऑर्डर मिस हो गया है ये हम ये जान पाए हम। ठीक है, इट enables the models to understand the syntax, grammar and directional flow of language without positional encoding. Sentences with the same words in different orders would be indistinguishable. So अगर positional encoding नहीं होगा तो क्या होगा? Sentences with the same word का sentence भी हो सकता है, but different order में है, तो इन सब को हम डिस्टिंग्विश, मतलब मॉडल डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं व्हाट दिस मीन द मॉडल, राइट? देन बाय एडिंग पोजिशनल सिग्नल्स, ट्रांसफॉर्मर कैन करेक्टली इंटरप्रेट रिलेशनशिप्स, dependencies and overall meanings, which is essential for accurate comprehension and generation. Now self attention, ठीक है, let me go. Self attention क्या है? Self attention is the core mechanism of understanding. Means it is the key innovation that distinguishes transformer architecture from earlier language model. पहले देखा ही था आप लोगों ने, sequential था, ठीक है, but transformer sense किया इसको. Parallel computation is possible now. It allows each token in a sequence to examine all other tokens simultaneously, and rather than relying only on the nearby or previously processed words. Through this mechanism, the model assigns different importance scores to different words based on their relevance to the current token. ये important point है, इसको note down कर लो. Through this mechanism means self attention क्या हो रहा है? Model assigns different importance scores to different words based on their relevance to the current token. Now, self attention enables the model to determine which words contribute most to the overall meaning, improving the contextual understanding. तो ये वो सारे वर्ड्स को डिटरमाइन करते हैं जो ज्यादा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है मीनिंग में, contextual understanding में, right? In ambiguous sentences, self-attention helps to resolve references by linking pronouns to the correct entities based on the context. जैसे कि the animal did not cross the road because it was tired. So self-attention correctly associates the pronoun it with animal rather than road. तो ये जो है, the animal did not cross the road because it was tired. अब ये ईट जो है ये या तो एनिमल को भी रिफर कर सकते हैं या तो रोड को भी कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज टायर्ड, राइट? बट जो सेल्फ अटेंशन है ना, वो क्या कर लेगा, खुद अपने आप ये जो ईट है इसको एसोसिएट करेगा एनिमल के ऊपर, ना कि रोड के साथ, ठीक है? So this capability allows transformers to resolve ambiguity, track relationship between words, and maintain coherence across long sentences and extended passages of text. ठीक है, समझ में आ गया? Now self attention impact across language tasks. लैंग्वेज का एस्पेक्ट है एक कॉलम में, व्हाट सेल्फ अटेंशन लर्न्स एंड पार्टिकुलर आउटकम, प्रोनाउंस, रेफरेंस रिजोल्यूशन, देन करेक्ट मीनिंग आता है, लॉन्ग सेंटेंसेस, डिस्टेंस डिपेंडेंसीज, बेटर कोहेरेंस, कीवर्ड्स, इंपोर्टेंट वेटिंग, फोकस अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट्स, सिमेंटिक एडेप्टेशन, रिड्यूस एम्बिग्यूटी, ठीक है? दीज आर द एस्पेक्ट्स. Now, multi-head attention, learning language from multiple angles. क्या है ये? Transformer use multi-head attention instead of a single attention mechanism, allowing multiple attention heads to work in parallel on the same input sequence. तो ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं? मल्टी हेड अटेंशन यूज करते हैं, सिंगल अटेंशन नहीं, मल्टी हेड अटेंशन. तो मल्टीपल अटेंशन पैरेलली वर्क कर सकता है एक ही सेम इनपुट सीक्वेंस के लिए. नाउ ईच अटेंशन हेड लर्न्स टू फोकस ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ linguistic relationships such as grammatical structure, semantic meaning, or contextual association between words. ठीक है, हर एक अटेंशन है तो ये अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप को मतलब लर्न कर सकते हैं. नाउ सम हैड स्पेशलाइज इन कैप्चरिंग लोकल रिलेशनशिप्स लाइक सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव नाउन connections, while others focus on long range dependencies between words that are far apart
in the sentence. Now, all attention heads operate independently and producing multiple perspective of the same input text at the same time. समझ में आ गया? So, सारे जो attention heads है वो independently काम करते हैं और सेम इनपुट टेक्स्ट का मल्टीपल पर्सपेक्टिव वो एक ही टाइम में प्रोड्यूस करते हैं. नाउ द आउटपुट ऑफ दिस heads are then combined to form a richer, multi-dimensional representation of language, improving overall understanding. Okay? Then the parallel analysis enables large language model to interpret a complex sentence structures, subtle nuances, and layered meanings, leading to more accurate and context-aware text generation. Okay, you got it. Now encoder. Encoder, deep language understanding machine. Now encoder क्या है? Actually, encoder is responsible for contextual representation, for transforming input text into deep contextual representation. फिर से बोलता हूँ, encoder is responsible for transforming input text into deep contextual representation. It consists of multiple stacked layers, is containing a self-attention mechanism followed by a feed-forward न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, इसमें मल्टीपल स्टैक लेयर्स होते हैं और हर एक में सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से आया. ठीक है, तो हर एक लेयर में तो ये अलग अलग सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म बाय फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, बाय फीड फॉरवर्ड नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क. Now residual connections and normalization layers ensure stability during training. Now, as input passes through the successive encoder layers, representations evolve from surface level word meanings to abstract semantic concept. जैसे जैसे input pass होगा ये अलग अलग encoder layers में, तो क्या होगा, ये surface level word meanings को abstract semantic concept में represent किया जाएगा. Now, encoder based architectures excel at tasks requiring comprehensions rather than generation, and such as document analysis, semantic analysis, search and question answering. तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ये एनकोडर बेस्ड आर्किटेक्चर है वो किस पे ज्यादा सही, मतलब ज्यादा सही है और ज्यादा सबसे बेटर परफॉर्म करते हैं, वो कॉम्प्रीहेंशन में, जहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चाहिए होता है, ना कि जनरेशन में. जो एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं, सिमेंटिक सर्च और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से करते हैं. तो एनकोडर बेस्ड मॉडल्स एंड कैपेसिटीज का कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं. मॉडल आर्किटेक्चर स्ट्रेंथ एंड टाइपिकल यूज केस. BART, you guys all know, it is a architecture, its architecture is encoder only, and strength and deep understanding and use cases like search, क्वेश्चन आंसरिंग, ये सब में यूज कर सकते हैं. देन रोबाटे, ये भी एनकोडर है, बात ये रोबस्ट सिमेंटिक्स देते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए ज्यादा अच्छा है. देन ग्रेनाइट, ये भी एनकोडर बेस्ड फोकस है, ये एंटरप्राइज ट्रस्ट है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, ये सब एनकोडर बेस्ड है. BART, रोबोटे, ग्रेनाइट. नाउ डिकोडर, कंट्रोल टेक्स्ट जनरेशन इंजन. The decoder generates text by step and predicting one token at a time using previously generated tokens and contextual representation. तो क्या करता है, डिकोडर टेक्स्ट को जनरेट करते स्टेप बाय स्टेप, एक predicting one token at a time using previously generated tokens and contextual representation. तो एक बार में वो एक ही टोकन को प्रेडिक्ट करते हैं, किसके थ्रू, प्रीवियसली जो जनरेटेड टोकन है और कॉन्टेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का हेल्प लेके. ठीक है, इट यूजेस, ये क्या यूज करते हैं एग्जैक्टली, इट यूजेस सेल्फ अटेंशन सो दैट टोकन्स आर जनरेटेड विदाउट एक्सेस टू फ्यूचर टोकन्स, प्रिजर्विंग लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंटिंग इंफॉर्मेशन लीकेज. तो जो डिकोडर है ये यूज करते हैं आपका मार्क्स सेल्फ अटेंशन, ताकि जो टेक के टोकन्स है वो जनरेट हो जाए विदाउट एक्सेस टू द फ्यूचर टोकन्स, left to right language structure and preventing information leakage. The decoder integrates contextual signals to maintain consistency and relevance across the general
that sequence. ठीक है, ये use करते हैं contextual signals. This design enables the production of fluent, coherent, and logically ordered text across multiple sentences. अच्छा, output देते हैं. Decoder-based architecture are well suited for conversational AI, creative writing, summarization, and code generation, and other control text generation tasks. ये सब के लिए डिकोडर बेस्ड आर्किटेक्चर अच्छा है. Now, encoder and decoder architecture, that is end-to-end transformation. Encoder and decoder models combine the strength of both the component. The encoder extracts meanings from the input, while the decoder generates structured output based on that understanding. समझ में आया क्या डिफरेंस है? जो एनकोडर है, एनकोडर क्या करते हैं? जस्ट अ मिनट. एनकोडर इनपुट से मीनिंग निकालते हैं, while डिकोडर एक स्ट्रक्चर आउटपुट को जनरेट करते हैं based on that meaning. Now, this architecture is ideal for tasks where input text must be transformed rather than simply analyzed or continued. तो ये आर्किटेक्चर कब अच्छा है? जब हमें इनपुट टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना हो, समझना हो, rather than simply analyze and continued. तो एनकोडर डिकोडर मॉडल्स इन प्रैक्टिस हम क्या क्या यूज कर रहे हैं अभी तक के? जस्ट अ मिनट, आई कैन यूटिलाइज दिस स्पेस. सो लाइक T5 है मॉडल, इनपुट आउटपुट प्राइमरी एप्लीकेशन. टैक्स के लिए यूज किया जाता है. टैक्स इनपुट लिया जाता है, टैक्स आउटपुट देते हैं प्राइमरी एप्लीकेशन समराइजेशन. बार्ट है, बड़ा टैक्स इनपुट होता है, क्लीन टैक्स दिया जाता है आउटपुट, टैक्स रिस्टोरेशन. देन IBM ग्रेनाइट डॉक्यूमेंट्स लेते हैं था इनपुट और देते हैं आउटपुट इनसाइट्स. सो ये एंटरप्राइज वर्कफ्लो है. नाउ सपोर्टिंग लेयर. क्या है सपोर्टिंग लेयर्स? Stability and learning efficiency. In addition to attention mechanism, each transformer block contains a feed-forward neural network. ये important point है, इसको underline करो. In addition to attention mechanism, each transformer block contains a feed-forward neural network that possesses each token independently after attention. The feed-forward network introduces non-linearity, allowing the model to learn complex patterns that cannot be captured by linear transformation alone. Residual connections are added around both the attention layers and the feed-forward layer, allowing the original input to bypass these layers and can be added back to the output. So residual connections को add किया जाता है both the attention layer, in both the attention layer and the feed-forward layer जो क्या करते हैं, ओरिजिनल इनपुट को बाईपास करते हैं, allowing the original input to bypass these layers and और इसको आउटपुट में and be added back to the output. Got it? Layer normalization is applied to stabilize activation across layers, ensuring consistent learning and faster convergence during training. तो लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है ताकि हमारा जो एक्टिवेशन है उसको स्टेबलाइज कर पाए हम across the layers and ensuring ये consistent learning को ensure कराते हैं और faster convergence during the training. Now, together, feed-forward networks and residual connections and layer normalization make it possible to stack many different layers without degrading performance. Example, like in a deep transformer with dozens of layers, residual connections ensure that early linguistic transformations such as basic word meaning is not lost as data flows through higher layers, while layer normalization keeps numerical values stable, enabling the model to train efficiently and produce reliable outputs. Now, why transformer dominate modern generative AI? Why transformer dominate modern generative AI? Can you tell me? Just comment your answer. तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ. ट्रांसफॉर्मर डोमिनेट जनरेटिव एआई बिकॉज दे कंबाइन स्केलेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड आर्किटेक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी. राइट.
in one design. Transformer Dragonite generative AI because they combine reliability, strong contextual understanding, and architectural flexibility in one design. By processing entire sequences in parallel, Transformer enabled efficient training on massive dataset, making large language models practical and widely adopted. Self-attention allows Transformer to capture long-range dependencies, maintaining coherence across long documents and complex conversation. Same Transformer architecture can be adapted for understanding, generation, and transformation tasks. And IBM Granite models built on this foundation by adding enterprise-focused features such as governance, transparency, data protection, reliability for safe business डिप्लॉयमेंट तो आईबीएम गनर हम यूज ही करते हैं एंटरप्राइज वर्जन के हिसाब से तो हमने क्या पढ़ा ट्रांसफॉर्मर आर प्रेजेंटेड एज द कोर आर्किटेक्चर behind modern generative AI system. Sessions explain this session हमने क्या explain किया कि raw text is first converted into numerical form using tokenization and embeddings, and it describes how attention mechanism provides contextual understanding across the entire sequence. Interaction between encoders and decoder हमने वो भी discuss किया. It clarifies with respect to the tasks like understanding, generation, and transformation. Then it clarifies why transformer outperforms earlier neural architecture and enable real-world applications such as chatbots, document intelligence, and enterprise AI system. ये transformer के कारण ये सब possible है chatbot, document intelligence and enterprise AI system. And this architecture foundation we prepare on we prepare to focus on model training, fine-tuning, and prompt engineering for effective use of large language model. तो ये था हमारा आज का सेशन. इसमें कुछ डाउट अगर है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं. Got it? So that's it all for today. Thank you.